Second point, underline, registered by the government. And function within the parameters of rules and regulations. Put it up there, don't fall down. And underline the word parameters. What are the parameters? You write rules and regulations. R and R dal do. Viraj? Such as factories act, minimum wage. ये सब bracket में डाल दो. These are different acts. If you are a registered firm, you have to sign all this. Is organized sector okay? Are you guys understanding? Come on, the next girl, start reading the unorganized. Let him read, complete. It's called organized because it has some form. Underline the word formal processes and procedures. ये सब मैं simple words में दे देता हूँ. Workers in the organized sector enjoy security of employment. Working hours are fixed and if they work more, they are paid overtime. Very good. Put all that into. I don't know whether your parents are getting this OTs or not. You know what are OTs? How much hours you get OT? Normally 8 hours government ka rules hai in every government job. If you are working even 1 hour extra, if I'm getting, I can say about India because India mein maine bahut kam dekha hai OT. Where I used to work abroad, they give me $25 per hour, 8 hours. If I work 9th hour, I'll be getting $35 for the 9th hour. Directly $15 बढ़ गया. I work 10 hours, $40 each. Understand what I'm saying? First 8 hours, I'll be getting $25. The next 2 hours, 10 hours, I'll be getting $40 each. So 8 into 25 and 40 into 2. Understood what I'm saying? So OT means overtime मिलेगा. Overtime का मतलब ही है you will not be paid as a regular 8 hours duty. Some extra government need to pay. It will be only in which sector? Whereas unorganized, वो आपको 12 घंटा भी कभी कभी काम कर रहा है, 16 घंटा भी काम कर रहा है. क्या है सर? फाइल्स, रिटर्न्स फाइल करने का. सॉरी टू से दिस प्राइवेट बैंक्स, यू नो क्या रहता है, 9 to 5, 10 to 6 रहता है. But after that 6 o'clock also these bank people work up till right night. You know that? My own student, she's a MCom pass out. She's a brilliant girl. She stays in Dombivli. You know what is Dombivli? And she works in Churchgate. Big bank. She gets a good, handsome salary. But she told sir, 6 बजे बैंक बंद होता है, हमको रात को हर रोज 9 से पहले तो छोड़ता ही नहीं. मैंने बोला ठीक है, आर यू गेटिंग पेमेंट आफ्टर 6? बोला नो, एवरीडे अकाउंट सेटल करो. एक भी केस अगर प्लस माइनस हुआ तो नेक्स्ट सुबह तो मैनेजर विल फायर अस लेफ्ट एंड राइट. Why the people are bearing such kind of jobs then? No. Unorganized. What else? What forces the people to accept the dadagiri? Unemployment है ना? अगर हर जगह जॉब मिल रहा है, do you think you will stick to a job? आज मैंने थोड़ा सा मुंह दिखाया, वो कल नहीं आएगा. I'm getting a better job. And the boss is so handsome, you see. And he never shouts at me. हर रोज मेरा ब्यूटी के बारे में तारीफ करता. तू खड़ूस तो बोलता भी नहीं. Understand what I'm trying to say? She or he will find out every reason. What he employees will say, बहुत ज्यादा समझता. मैं किसी लेडी के साथ बात करेगा ना, इसका पेट में क्या ही, शी इज माय एम्प्लॉय, कॉफी पी रहा था कल और आ गया बीच में बैठ गया. अभी मैं बात किया, हेलो हाय, ये आ गया, घुस गया, बोले वो फाइल्स निकाल, ये फाइल्स निकाल. अरे थोड़ा टाइम दे, मैं नहीं आता तेरा जॉब, है ना. आई कैन नेम सो मेनी प्लेसेस इन यूरोप. कंट्री इज वेरी स्मॉल, jobs are very high in numbers. Recently, not recently, before COVID only, I'm trying. There's a place called Luxembourg. Actually, it's not Luxembourg, I'll tease that, is Luxembourg. सुना है? वे हाँ, नीदरलैंड सुना है? Just I think 2 miles, not 2 miles, 2 flying hours, 2 hours. The first German people, क्योंकि Hitler kept Luxembourg under his control. Oh my God, Hitler. Then came the party people. Who's this party? France, capitalist party. And then they say कि कोई है क्या? फिर मैंने पूछा, no, you are a local, don't. You are a German, come.
You're a party person, come. If not, don't. But GDP of that small country is 10 times higher than US. Oh, 10 times higher than US. But to crack that interviews are not so easy. पहले तो आपको local language आना ही चाहिए. If you're a German speaking guy or a girl, guaranteed. You speak French, please, Modoa, Moisier, come on. मैं तो मिस्टर है, तो भाग इधर से. So look how these countries are organized. There are not more than 36 countries in NATO. If you attack one country, all 35 countries will come in together. So what is the cause of fight between Ukraine and Russia? Anybody? Ukraine wants to join NATO. And Mr. Putin ने बोला उसके तरफ आंख भी उठाया ना, आंख निकाल दूंगा. Because it's like India and Pakistan, Ukraine and Germany, Ukraine and Russia. In fact, many Russians are in Ukraine and many Ukrainians are in Russia. Earlier, वो division के पहले दोनों एक ही था. Till now, the fight is on. Who is victorious? Who is losing? But Putin हर 2 दिन में बड़ा अटैक करता रहता. I think yesterday I was watching some international news channels. They were saying कि after 2 days, America is going to land some fighter planes on one of the airport of Ukraine. You know what did Putin do? वो पूरा एयरपोर्ट को उसने खंडर बना दिया. उसने चैलेंज किया, चला भी प्लेन उतार. अमेरिका बोला नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने उतार लिया. And Putin shocked American president. He has put a requisition letter to America. We need F-35 from you. मतलब जो प्लेन यूक्रेन को जाने वाला था, रशिया बोला मुझे दे देना, मैं दूंगा पैसा तुझे. Look how normally Russia and US doesn't come on one table. You know that? If they are meeting in an international seminar or conference also ना, Americans have this at least good friendship to at least उसको हाथ तो मिला लेगा. पुतिन उधर ही खड़ा रहेगा चुपचाप. जब तक वो अमेरिकन प्रेसिडेंट इधर आता है वो तुरंत निकल जाता. फिर इंडिया एंड पाकिस्तान फिर भी चलेगा, हम थोड़ा बहुत बिरयानी शीर कुरमा पास कर लेते हैं. बट रशियन विल नॉट डू. व्हाट्स द हेट्रेड ऑफ रशिया विद यूएस? नो आइडिया. व्हाट वाज यूएस रशिया's earlier name? USSR. हाँ, now what has happened? Broken, na? 15 countries. Who had broken that? America. And that great, not great, terrorist called Osama. You know Osama? He was a product of Americans only. अमेरिका ने पूरा ट्रेनिंग दिया उसको. अमेरिका ने उसको यूज किया. फिर भाई साहब काम होने के बाद अमेरिका ही बैंड बजाया उसने. ट्विन टावर्स को नीचे कौन लेकर आया? ओसामा. So look how this geopolitics is playing. फिर आप इंडिया का अगर पॉलिटिक्स बात करें तो फिर केजरीवाल तो हर न्यूज में रहता ही है. कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर. भाई साहब पूरा 10 दिन तक फ्रेमिंग में था. अभी 2 दिन के बाद उसको अंदर जाना है. तुरंत भाई साहब को कैंसर, किडनी इश्यूज ये सब हो गया. बोलता और 1 more week एंड हाई सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों? टेस्ट करना है. आई एम इन अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम. अरे भाई जैसे ही जेल से निकला तू मोदी का नाम से फटाका फोड़ रहा था, तब तुझे हेल्थ इश्यूज याद नहीं है? अभी अंदर जाने का बात आया तो ही इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. आई कांट इवन गेट अप. तो किसी ने उसको व्हाट्सएप में डाला है, साहब आपका एक रैली बाकी है, अभी आ रहा हूँ, रुक जा. लुक हाउ दिस पॉलिटिक्स इज कंबाइनिंग. फिर तुरंत बोलेगा मोदी साहब बहुत अच्छे हैं, बस उनको 7 दिन के लिए छुट्टी देने बोलो. मोदी बोलेगा भाई साहब आप अंदर जाइए, हम बाद में बात करें. So why I'm narrating this? Because when we talk about these sectors, government sector in India is totally different. Government sector in foreign countries is totally different. Public sector in India is different. Private sector in America is different. In fact, government sector है ही नहीं, है ना? US में all private है. Even weapons manufacturing, India में तो strictly government के हाथ में है, that it is all private. अभी these 2 guys are weapon manufacturer, एक example. ये दोनों बात कर रहे हैं, यार कुछ वॉर ही नहीं हो रहा है यार. तो ये बोलता है हाँ यार, अभी मैं प्रेसिडेंट को कॉल लगाता हूँ. तो मिस्टर जो बाइडेन, यस माय डियर. बोलते क्या माय डियर, बिजनेस ठंडा है, कुछ करो. बोलता अच्छा तो मेरा कट कितना है? 20%. तो जो बाइडेन विल बी हैविंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस. ईरान इज डूइंग न्यूक्लियर टेस्ट. आई एम वार्निंग ईरान. मतलब उसने स्टार्ट कर दिया वॉर का.
है ना, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन ईरान। ईरान चुप नहीं बैठेगा, सडनली ईरान इजराइल को अटैक करेगा, तो अब जो बाइडन फिर चलेगा, हाँ चलो बिजनेस स्टार्ट हो गया बोला। he will go with Iran, don't worry, I am supplying whatever arms you need, and he will go with Israel, you don't worry, I am giving you। फिर जो बाइडन 2 दिन के बाद आएगा, डेमोक्रेसी इज एट अ थ्रेट, पीस हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, अमेरिका इज सेंडिंग इट्स ट्रूप। तो फिर दोनों मिलके बोलेंगे, लो अमेरिका तुम भी वेपन्स लेके जाओ, लुक हाउ द बिजनेस इज फ्लरिशिंग। फिर जो बाइडन 6 महीने के बाद बोलेगा, डोंट वरी, ऑलरेडी मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लगा के छोड़ा है, अभी उन दोनों का कुछ होगा तो हम बीच में कूदेंगे। फिर चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना विल ऑल्सो जंप इन। So sorry to say, this entire fighting which is going on, it's all money making. है ना? If America could have wanted Ukraine to stop the war, it could have stopped long back. What America's cry? You go ahead, we are behind. अरे go ahead करने के लिए यूक्रेनियन बचा ही नहीं, आधा जन तो मर गया है। तो यूक्रेनियन स्मार्टली बोलता है, सर यू गो अहेड सर, वी आर बिहाइंड। नो नो सॉरी सॉरी, वी आर पीस लविंग पीपल, वी विल नॉट फाइट। कोई अमेरिकन मरा क्या उसमें? एक भी अमेरिकन नहीं मरा। But Americans are very happy. जब तक यूक्रेन है हमारा बिजनेस चल रहा है। And that fellow, even his name is Vladimir. You know that? His name is Vladimir Zelensky, Ukrainian president. He was a comedian in the Russian news channel. Huh? He was an actor, popular actor, वो भी. And he is doing comedy with his own country. ये हमारे यहाँ पे भी 2 कॉमेडियन है, एक तो सीरियस कॉमेडियन है केजरीवाल, दूसरा कॉमेडियन है पंजाब का सीएम। You know, is Mr. Man, I think, Gurudas Man or some, I don't remember. He was a channel fellow, ये जो लाफ्टर चैलेंज पे आता था वो, हाँ, और खुद बोल रहा है वो, मैं जब लाफ्टर चैलेंज में लाखों रुपए कमाता था, भाई अभी तू सीएम है, सीएम की तरह बात कर रही है, मैं इतना हंसाता था, इतना हंसाता था। किसी ने उसको पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, उसमें भी 2 जोक मार दिया उसने। तो प्रश्न बोले, सर ये सीरियस क्वेश्चन था। तो क्या हो गया, हंसते हंसते बात करेंगे। पूरा पंजाब को उसने लाफ्टर चैलेंज ही बना के रखा। हाँ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स। केजरीवाल साहब अभी क्या करना, तू चुप बैठ, हंसना बंद कर, पहला चैनल देख रहा है तुझे। So when we talk about this public and private sector, organized and unorganized sector, the politicians, the leaders play a big role. I mean, I'm giving the defense of a country who himself doesn't know how to defend himself. Understand what I'm saying? And he's a defense minister of the country. What he will do? What he will do? So Modi ji at least made one smart decisions. कौन सा industry में, कौन सा sector में, कौन सा minister है, he is perfectly placed it. Nobody can forget what Mr. Amit Shah told in that parliament. POK, मालूम है ना? He said हम जान दे देंगे but POK नहीं छोड़ेंगे. Do you think Amit Shah अपना जान देने वाला है? But at least he has the guts to say. जैसे ही उसने बोला जान दे देंगे, पाकिस्तान आधा लोग वैसे ही मर गया। बाप रे, ये जान देने का बात कर रहा है। मतलब कभी ना कभी तो लोग ले लेंगे। अभी 4th जून का इंडिया इज वेटिंग, यू नो 4th जून। What is 4th June all about? She's dreaming. The results of Lok Sabha elections are going to be disclosed. I have my college and UT work. If not, early morning 9 o'clock or 8:30 से start हो जाता counting. By evening, you will get a result. And we should see all the channels. एक channels में Rahul Gandhi is dancing. I become the prime minister. In other channel, Modi ji saying, "बेटा बैठ जा, बैठ जा." अभी बहुत जल्दी है, इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है ना। दूसरे साइड पे और ही कुछ चल रहा है सब। हाँ, केजरीवाल ने बोला हम दिल्ली में पूरा फतेह किया, मालूम पड़ा 0 वोट्स जीता है उधर दिल्ली में, है ना। हाँ, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी ज्यादा चल बे ना, हम इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानता है। तुम नहीं मानता है तो क्या हो गया, रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया। नहीं, री इलेक्शन होना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, तू हट यहाँ से। So we all believe this organized sector and unorganized sector has a deep bearing over the leader, है ना। अभी however the election news or any news are going to, मोदी जी ने इलेक्शन के बाद जितना भी इंटरनेशनल सेमिनार है उधर तो अपना नाम भी लिख कर आ गया मोदी, मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी। 13th जून इज गोइंग टू इटली एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर इलेक्शन का रिजल्ट तो 4 तारीख को, डोंट वरी, मैं ही बनूंगा। 20 तारीख का भी इंटरनेशनल सेमिनार, उधर भी लोग ने मोदी का नाम लिख के रखा है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
Shri Narendra. हाँ नहीं मतलब look at the confidence of the person. Whereas हमारा राहुल उसका कॉन्फिडेंस तो स्काई लेवल है. बोलता है 4 जून हम 300 सीट जीतते हैं. तो किसी ने बोला साहब लास्ट टाइम हम लोग ने 30 सीट भी नहीं पकड़ा. अरे छोड़ ना, 1 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. लास्ट टाइम दे हैव गॉट पूरा इंडिया में आउट ऑफ 552 दे हैव गॉट ओनली 40 सीट्स. एक पार्टी जो कभी 400 सीट से आगे था अभी 40 सीट में बैठा है और आगे पता नहीं कितना सीट में जाएगा. और राहुल ने भी अपना कॉन्फिडेंस दिखाया. ही इज गोइंग टू इटाली. somebody told sir he is going to get married. हाँ ऑलरेडी 2 बार उसका हो गया है, ये तीसरा बार है. सर वो बैचलर बोलता है. हाँ वो इंडिया के लिए बैचलर है. उसका 2 अमेरिकन पासपोर्ट है, एक यूके का पासपोर्ट है, एक इंडिया का पासपोर्ट है. फिर मैं बोलता कि आई एम द ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया. If any minister is having more than one passport of that country, you are not to be a minister. But Rahul है भाई, वो कुछ भी कर सकता है. हाँ, he is holding American passport. You and me holding an American passport, you are not a citizen of India. You are a citizen of America. अब इधर अपना मम्मी पापा को आने के लिए 14 दिन का टूरिस्ट वीजा पे आना पड़ेगा. रूल्स है. Understood what I am saying? So we always believe this organized sector is so strict, but it is good for whom? Common people. Unorganized sector is very free. हाँ बोलेगा फ्री आपको बोलेगा कल निकल जाओ. सर मैं काम कर रहा 15 साल से, तो निकल जा आज. सर आप मुझे पेंशन देगा नहीं, ग्रेचुटी देगा नहीं, मेडिकल अलाउंस देगा नहीं, और क्या देगा? अनएम्प्लॉयमेंट देगा. लेकिन निकल है ना. बट इफ द गवर्नमेंट इज रिमूविंग फ्रॉम हियर, गवर्नमेंट हैज टू गिव मी ग्रेचुटी, पेंशंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस, एचआरए, टीए. गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है काम कर, तू काम ही करके जा भाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास. Understood? So this is that job guarantee we talk about, and no job guarantee here. Who was reading? Chalo, Amen. Sorry, Amen. हाँ अंडरलाइन द वर्ड scattered unit. Small and scattered. ये बड़ा फॉर्म नहीं है. Underline only the word outside the control. Underline. Not followed, like you and me. Just 1 minute, huh? Just 1 minute. सब चालू है. ये देखिए ना, सब चालू कर दिया. मैंने उनको बोला कॉल कर. हाँ हाँ कर रहा है, नहीं कर रहा. हाँ गोवा वाज रेडी. अंडरलाइन द वर्ड नो रेगुलर जॉब्स. मतलब 3 महीना रहेगा, बाकी 6 महीना बोलेगा घर पे बैठो. नहीं देगा. गवर्नमेंट इज द ओनली सेक्टर इन आवर कंट्री, आप जाओ या नहीं जाओ.
Just a minute. Viraj, now can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. It's okay. I've used the mic also. Switch on the video at least. If you're unable to hear me, you can put a text, my dear. You have missed close to 1 hour of class. Yeah, sorry, sir. It was a problem in my Okay. settings. It is not going to affect me, my dear friend. It is going to affect you. ठीक है, copy कर लो फटाफट. ये provident fund. I have to bend and write, na? So that. I have to sit on the CPU, is it? Yeah. What happened? What happened? Tell me. Last person, what happened? In fact, I could have pulled this up, is it? It could have been an electronic board and a smart board. Copy down all this. What was the doubt, my dear? You were saying na, some doubt. Clear? Hey guys, copy down that organized sector. So there are certain points I have to explain. Once you done say yes, then I'll explain all. I tend to read this bag as Toronto. Tokyo. Who is gone? Papa ke boss. Achha. You have visited anytime Japan? What does he do? Achha. And Papa is giving medicines. Doctor ना ठीक है. Medicine ही तो देंगे. Is it MBBS or फिर क्या है? नहीं, might be DHF or CMS. There are many ना. Which specialist is? General physician. Very good. Which hospital is in? Age Virya. इधर है भाई. चल. And what you guys are doing, father? My father is Army man. vice president in Hyderabad. Oh, and Vice president यार हम लोग को ऐसा टेंशन आता. My papa is RIP. Sorry for that. चलो. So when we talk about this organized sector, we use this word something called as ये तो मालूम है ना, medical and sickness allowance मिलेगा आपको. आप छुट्टी भी लेगा आपको मिलता है. Second is something called as provident fund and retirement pension तो सबको मालूम है. When he crosses or she crosses 59, pension process start हो जाता है. By the time you get your pension, retirement, आपका pension मिलेगा as long as you are alive. And once you are dead also, the spouse will get 3/4 of the money. I mean, my papa is no more, but my mother gets monthly pension. Mother hasn't worked for government. Then what did she do? She partnered with my dad. Just because of that, वो पैसा मिल रहा है. मम्मी को बार बार बोलता हूँ बिना काम के पेंशन लेता है ये अच्छा नहीं है ना. Do you think that facility will be given in an unorganized sector? सर पेंशन तो दूर है सर, मंथली सैलरी भी ठीक से नहीं देता. ये महीने का सैलरी 4 महीने का बाद बोलेगा, 4 महीने का सैलरी कब देगा गॉड नोस. Correct. And what is this gratuity? Out of the total monthly income you are having, some percentage is deducted. आप बोलेगा मेरे सैलरी से तू डिडक्ट क्यों कर रहा है? You can take money loan from there. मेरा पापा लेते थे.
ग्रेचुइटी से लेने का, जीरो इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट। एंड प्रोविडेंट फंड तो और भी आगे, अभी बच्चों का पढ़ाई है या घर लेना है, सब कुछ प्रोविडेंट फंड से मिलता है। तो देर आर सो मेनी फैसिलिटीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर विच यू कांट इवन थिंक इन विच सेक्टर, unorganized. So we get provident fund, gratuities, retirement pensions. What are you aiming for? Private or government or non-government sector? Non-government only. क्यों भाई? नहीं चाहिए? इतना फैसिलिटी नहीं चाहिए? सर गवर्नमेंट में जॉब है किधर? In fact, many North Indians, some of my good friends, they say to get married in North India, you have to have a government job first. You might be a peon, you might be a clerk. गवर्नमेंट में है तो आ जा। ऐसा क्या अट्रैक्शन है सर? यूपी बिहार गवर्नमेंट जॉब के बगैर कुछ नहीं होता है। क्यों? बेनिफिट्स इधर आपका बोर्ड में है, काम नहीं करने के लिए आपको सैलरी देता है। प्राइवेट में बहुत काम करता हूँ, इतना काम करता हूँ बट सैलरी कुछ नहीं मिलता। मिलता है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? So we always believe this organized sector is a distinguished sector which is good for the country and good for the citizens. चलो अभी इसका डेफिनेशन में इतना ही दूंगा, रेस्ट यू हैव टू राइट ऑपोजिट। अंडरस्टूड? रिलैक्स रिलैक्स। ये कौन सा मुद्रा है भाई? योगासन में ये मुद्रा ना। ओके, सो लेट अस राइट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय, अगर टायर्ड है तो बोल, आई विल अलाउ यू। Mainly characterized by, whereas we have moved to this, you have to write here, mainly characterized by small and scattered units. Mainly characterized by small and scattered units which are outside the control of government. Which are outside the control of the government. GOVT है ये, कौन सा नया? GOV नहीं होता, GOVT होता है। नहीं मतलब सम स्टूडेंट्स में सर वो आपका टाइम का, ये मेरा टाइम का। फिर और आगे एक टाइम आया सिर्फ GO लिखा, मैं बोले ये क्या? गो, गवर्नमेंट गो। और आगे आया ओनली G लिखा है भाई, गवर्नमेंट है। Okay, second point also I'll give. The next things you can use the opposite. No or less job guarantee. No or less job guarantee. Since no formal process of appointment and removal. Since क्यों जॉब गारंटी नहीं है? No formal process of appointment and removal. No formal process of appointment or removal. That's it. Now you can copy down from the board, but it should be the opposite. है ना? You understand? Removal or removal. चलो, this is the last part of the topic. हाँ, और भी है, but it is very simple. फिर एक छोटा पैराग्राफ है, responsibilities of the government. Then we are good to go with a new chapter. है ना? हाँ मैंने दे दिया ना ऑलरेडी। हाँ मैंने दिया है ना इसके पहले। ओ माय बॉय, आज तेरा पार्टनर नहीं आया तो तू सो रहा। इज वेरी डिस्टर्बिंग है। चलो अच्छा है, बट वेरी एक्टिव फिल्म, बट मस्ती को। While writing, you have any queries, please ask me. You have to just write opposite, even Viraj. Okay. Unequal pay for unequal work. Okay, you can write more job exploitation. It's on page number 150, 159, Viraj. UT volume 159. Smartly write down. Don't copy. Benefits की जो है No benefits like
No benefits of the organized sectors are provided here. और एक दो benefit नहीं उतना डिटेल में मत. If it is not there, then why are you writing? हाँ तो अपने ओन में लिखो. दो जो मैंने बोर्ड में लिखा वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर. हाँ, they are not registered under any government of act. Not registered. इसीलिए तो अनऑर्गेनाइज्ड है ना. Any extra points you need, you can ask me. Your school's reopening dates are done. 10th. Oh, good, yeah. 10th of June. A good amount of holidays, huh? क्योंकि यूटी का तो लेक्चर्स अभी. हाँ तो 1 2 up till 9. How about you guys? सब 10th June. यार अभी तुम्हारा रियल वेकेशन है फिर. तो 9 days का क्या प्रॉब्लम? वे ये 40 days नहीं था. मेरा कैसा 31st तक इधर है, 30th तक इधर है, 1st से वहां स्टार्ट हो जाएगा, फिर उधर भागने का, इधर आने का, उधर. Literally 4-5 days I was not in. 6-2. And that will be, your lecture schedules will be 4:15, na? I don't know. Our timetables are a bit changed, so थोड़ा सा careful रहो. I think. कैसे? बस. And June also due to heat wave, some schools have. June. छुट्टी. बस यही कर. फ्लड आना चाहिए. तो मेरे जैसा टीचर का क्या होगा जिसको स्विमिंग भी नहीं आता? तो किसी स्टूडेंट में ठीक है ना, जाओ ना पानी में. कौन रोक. ओके. मैंने एक शब्द क्या पूछा, पूरा स्टार्ट हो गया. हैप्पीनेस. हाँ चल. Now let's write the heading called responsibilities of the government. Only write. Listen. Need for production. इधर है. हाँ वो मैं रीड करके समझा दूंगा, उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आता. अच्छा, नीड फॉर प्रोटेक्शन, ये रूरल एंड अर्बन. When I ask you what is the responsibility of you, are you able to tell me? No. Yes. बोलते क्या responsibility है? स्कूल जा रहा है, आ रहा है, क्लास में तेरा मुंह देखने आ रहा है, फिर जा रहा है. और भी कुछ करने का? फिर आज और भी कुछ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब तू मेरे से कनेक्टेड नहीं है, मुझे टेक्स्ट डालने का. मैं तेरे पीछे नहीं भागेगा. करेक्ट. ठीक है. गुड. रेस्पॉन्सिबल फिलिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन अपने पास पॉइंट्स बहुत आते. स्पेशली स्टूडेंट. एग्जाम कंपलसरी नहीं रखने का ना. हर साल क्यों रखते हैं आपको? क्या जरूरत क्या? आई एम बॉर्न ब्रिलियंट, है ना. और अटेंडेंस हफ्ते में 2 दिन चलेगा, बाकी 4 दिन घर बैठ के होमवर्क है. भाई प्रोजेक्ट दिया है मुझे, है ना. सो आई सेड प्राइसेस ऑफ ऑनियंस एंड टमाटोस हैव इंक्रीज. तुरंत नीचे मोदी का नाम आता है. व्हाट इज दिस मोदी डूइंग? 400 पार, इधर टमाटर 400 पार हो गए, है ना. सो व्हेन आई आस्क द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, देयर आर मेनी. देखो, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी ब्लेम इवन द कचरा वाला नॉट कमिंग, मोदी जी इज रेस्पॉन्सिबल, है ना. गटर इज नॉट गुड, मोदी जी सब.
But if the opposition is not good, इसमें भी मोदी जी का ही हाथ है. राहुल ऐसा क्यों है? एक नया मूवी रिलीज हो रहा है, नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड बाय मोदी जी. है ना? एंड राहुल विल बी वेरी, मेरे नाम का भी मूवी बना सर, वो कॉमेडी मूवी है, वही तो बनना चाहता है. एंड पीपल अंदर जाके इतना रोया, उसको मेडिकल प्रॉब्लम बताया. Yesterday I was seeing one of the, I think, program where he is attending, and some people are putting some auspicious mala. उसने एक का तो बहुत इज्जत से ले लिया, दूसरा आ रहा जा और बैठ भी गया. ये कौन सा बिहेवियर है यार? तू रहेगा राजकुमार तेरा घर का, पब्लिक में तुझे कैसा बिहेव करना है, इट स्टिल डजंट नो. एंड व्हाट इज दैट स्लोगन नाउडेज? मेनी पीपल आर टक टका टक टक. हाँ, उसने बोल दिया 8,000 रुपए आपके अकाउंट में हर महीने गिरेगा, टक टका टक टक. तो किसी ने बोला ऐसे साउंड के साथ गिरेगा? हाँ, ऐसे ही गिरेगा. So we believe that government for your and my welfare has many responsibility. The first responsibility, I said, basic facilities. What it needs to provide? Electricity, है ना? Drinking water. No sir, safe drinking water. और क्या? Housing facility. हम तो प्राइवेट हाउस में रहते हैं. अभी गवर्नमेंट ने वो भी स्कीम स्टार्ट किया, बहुत जल्दी गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए बना रहा है और बनाया भी है. देन roads, railways, schools, hospitals, and overall welfare. Can we keep on blaming the government and keep quiet? What you and me have to do? Draw the attention of the people. Create a public opinion. Abhi, if you are into some social sites, whichever sites you are in, what are we discussing? कुछ नहीं सर, कल वो पार्टी में गए तो पिक्चर शेयर कर दिया. कल नया ड्रेस पहना था सर, पिक्चर शेयर कर दिया. कल बर्थडे पार्टी में मैंने डांस किया, वो डांस उठा के डाल दिया. है ना? What are we sharing? Some problem in Koperkena where the government is not drawing their attention. Let us put it into it. My school teachers are having a good responsibility. Let us put some good example of it. What are we sharing? So your responsibility is added into whose responsibility? Government. Government is made up of whom? You and me only. Government क्या ऊपर से खुदा है क्या? No. Even they are also common people. But then I have to understand what is their responsibility and accordingly I have to perform. Okay? Chalo. The last girl. You read. Responsibilities of the government. I am not giving notes. I'll be marking here only. Okay. Go ahead. The government has to undertake several activities which the private sector will not provide. Underline that word. Page number 160. Private will not provide. Why private will not provide? प्राइवेट बोलेगा ये मेरा सरदर्द नहीं है. हाँ, ये गवर्नमेंट का काम है, मैं नहीं करेगा, इसमें मेरे लिए प्रॉफिट नहीं है ना? गो अहेड. Put all this into bracket. Construction of roads, railways, electricity, irrigation. Close the bracket. Go to the next point. Open bracket. Must spend on health and education. We have this in our country. I don't know how many really knows the full form of this. Could anybody tell me? This is related to your health, Dr. Sir. All India Institute of Medical Sciences. Big hospitals. You go to Delhi, we have AIIMS. I think Bombay mein ya Maharashtra mein maine to nahi dekha. Majority AIIMS are there, only 4 in India. Now it is 12. 12 AIIMS are there. All the government medical surgery, everything is here. Because Bombay mein we have Sign Hospital. Have you heard about? Yes. Then we have this Hinduja, JJ. Private here, but they work on charity. So ये बहुत जरूरी है. Then Atal Setu. Is it a pride of Navi Mumbai now? Pride of Mumbai, sir. आप नवी मुंबई से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कल ही मेरा कोई रिलेटिव्स गया था. They took a car from Panvel, took a Atal Setu, directly went to Worli. Worli से सीधा बांद्रा होते हुए फिर एयरपोर्ट. सर आधा घंटे में मैं पहुंच गया. वो अगर पनवेल से बॉम्बे आता, बॉम्बे से साइन जाता, साइन से बांद्रा जाता, सर खत्म. पेट्रोल भी खत्म, टाइम भी खत्म. And did I not show you that coastal road project? How the tunnel is so beautiful? So this is again pride of India. And what is the good thing about that coastal road? No RTO taxes, free. But only 4-wheelers, 2-wheelers are not allowed. But that is also great. Now we have 5G services in India. And the greater news is
Maybe very soon you will enjoy 6G network. Wow, गेम खेलने के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी है। वो ये नहीं बोला कि मुझे डाउनलोड करके कुछ पढ़ा, नहीं, गेम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल। मूवीज डाउनलोड हो जाता है सर, ऐसा और क्या चाहिए, पढ़ाई वो तो आपके लिए तो चल ही रहा है। सो ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ whom? Of the government. Okay, go ahead. Then Robert would have provided Underline that word elementary. उधर लिखो 10th standard. क्या लिखने का? फ्री एंड कंपलसरी, करेक्ट? गो अहेड. Open bracket, safe drinking, housing, food and nutrition to the poor. Next. Underline that word increase spending. Now, wherever you put the heading, whatever I made you to mark, copy down all this. You got any more points I can give you. Try to make only 3 to 5, not more than that. Only the underlined words. Bullet points. I'll add more points to it. Responsibilities of the government. Short points, but only the punch words. You guys have got geography volume, na? Second chapter completed, correct? So we are in for third and very important chapter. What are the source? Ask him to write the complete responsibilities. And always keep your notebooks and volume complete, huh? I'll take it for a check anytime. Make it plural, responsibilities. You're doing it. Or you have some doubt. Definitely. Where are you solving? I got started yet. Exams are coming. Good, huh? You're such a sweet darling. इतना हार्ड वर्क करता है. Good. Good. वो देखो तुम्हारा दोस्त ऐसे ही. भाई ऐसे ही लोग फिर मालूम पड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए. ओलंपिक्स आ रहा है इंडिया में, मालूम है ना? कब आ रहा है? मोटो जीपी पे आ रहा है. कब है? न्यू दिल्ली में ना, जो ट्रैक बना है. हाँ, वो ट्रैक तो उसका लिए है ना, F1 के लिए. Good यार. I'll be happy to become a F1 तो मैंने देखा है, मोटो जीपी कभी नहीं देखा है. I've sat in the F1 car also, but वो लोग ने ऑन करने नहीं दिया. बोले चुपचाप अंदर बैठ और फोटो ले. मैंने साथ थोड़ा सा ऑन करता हूँ. तो ऑन करेगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा. फिर वो सिक्योरिटी गार्ड क्या बोल रहे, उसमें पेट्रोल नहीं है ना.
बोले ठीक है ना, तो धक्का मार उसको। He told me 1.5 CR है वो गाड़ी का कॉस्ट है, तो कुछ नहीं है, टायर और इंजन ही है, बाकी सब तो। बट उसका हॉर्स पावर कितना है मालूम है ना? ये टोल्ड मी 400, हाँ 400 किलोमीटर का टॉप मोस्ट स्पीड इज 395। 390 पे तो मैं बाबा 39 किलोमीटर में भी नहीं। वाइट, शी इज इन अ वेरी सबलाइन फॉर्म। क्या हो गया? सिट स्ट्रेट स्ट्रेट। ये देखो, शी इज डूइंग सम प्राइवेट सम गुड नोट्स। नोट्स, अरे नोट्स वगैरह कर रही है, तो आप लोग भी ऐसा प्राइवेट से क्या होगा? नोट्स वगैरह शी इज डूइंग इट, सो यू गाइस आल्सो राइट लाइक दिस। शी इज आस्किंग मी, वो लास्ट ईयर वाला, इधर तो हमारा फर्स्ट ईयर वाला ही कोई नहीं करता है ना? पहला एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन हो सॉल्व करना, दैट इज अ मस्ट, देन यू डू। एंड वन यू अटेंड दिस, somebody call me, when you attend this UT test night, is so easy, don't miss it and try to perform. कितना मार्क्स मिला? Out 15, I know that. How much? 14. क्यों? अरे मार्क्स तो बोल दे पहले। सर आपने लिटरेसी कितना ऐसा कुछ तो बोला था कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग वो लिटरेसी रेट लिखा है, फिर आर्ट ऑफ स्पीकिंग कैसे आएगा? राइटिंग कौन मैं करेगा? लेकिन उसमें वही लिखा था देखो, you have any query in the answer sheet ना, you should bring it to me, ठीक है? The good thing is that I am not in the exam department here, but I can tell them. अभी yesterday some ICSE people told me that 1 marks was not given. I told the concerned teacher. She told ठीक है सर मैं दे। आप लोग कभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर? खत्म हुआ कि नहीं, पॉकेट में दबा के निकल जाता, यही करता ना? हाँ गुड, चलो भला टला। एंड वो सॉल्यूशन की यूज करना, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज पुट इन, एंड इफ यू आर नॉट आंसरिंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर, जैसे आज मैंने फर्स्ट आंसर कैसा आपसे लिखवाया, अंडरस्टूड? सिमिलरली यू हैव टू डू। बहुत बोलता हूँ बट ये लोग ऐसे ही मुझे देखते रहता। बोल दिया, चल ठीक है आगे बढ़ो। Especially Amme na, Amme looks at me but thinks something. Tell me, what were you thinking? आप भरो, सोचा नहीं? ठीक है, then small children are like this. Okay, now then we are going to a new chapter in geography, water resources. But before to that, we have some questions to be solved in the same chapter. As per the economics first chapter, second chapter has detailed on our own. She's not karo. Come to page number 180 of your UT volume. There are 1, 2, 3, 4. Easy. 5 today only we have done. NREGA. Disguised unemployment is what? disguise extra people Extra people are working, they are not adding to the total. That you have to write. What happened? How do we describe a sector as public sector? इसका तो direct answer दिया है. How do we describe a sector? चलो, sort out 7 and 8 right now. It is there in the volume. I'll tell you the page also. हाँ, public answer लिखना है. हमें, you are very hardworking girl. You are. इतना hard work मत करो. It's on page number 159. 159. Both public and private sectors are there. Come on. Yes, right now 7 and 8. Yes. Page number 159, the answer is there. Start writing. You feel my support, I'm there. इसमें तो unorganized है नहीं इधर है ना my friend. तो 7 and 8. यार आप मेरे साथ है ना क्लास के अंदर? मुझे तो डाउट लग रहा है आप एलिस इन वंडरलैंड में, आम्या इन वंडरलैंड. Both the answers are there. Huh? Private sector is also there, public sector is also there. Correct.
पब्लिक अनऑर्गेनाइज कहाँ से आया? पब्लिक उल्टा ऑर्गेनाइज रहेगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर है ना. प्राइवेट इज अनऑर्गेनाइज, नॉट ऑल प्राइवेट, फ्यू प्राइवेट. ये क्या है मेरे? Bring it. क्या है? स्कूल में मिलेगा तो काट देने का तुमको. फिर भी ठीक. यू आर अ नाइस लिटिल गुड गर्ल, बट थोड़ा कम रखो ना, किसी को ऐसा करने के लिए रखो. Hey guys, complete the answer and tell me. कितने पॉइंट्स लिखी? हाँ, ये तो कम है, उल्टा मैं दूं सिंपल में. दो ही लिखे हैं, इसमें तीन ही है. हाँ तो और थोड़ा सा लिखो. प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या दिया है? यू आर राइटिंग प्राइवेट सेक्टर ओनली ना. यू राइट अनलाइक द पब्लिक सेक्टर जॉब गारंटी इज लेस. जो जो हम लोग अनऑर्गेनाइज का लिखा है यू कैन ऐड इनटू प्राइवेट. अनलाइक द पब्लिक सेक्टर जॉब गारंटी इज लेस, ऐसा लिख सकते हैं. You need my help. Next time you come somewhere in the first bench. What's the name? Somewhere here or here will do. I can help you for writing answers. Or my dear student called Divya is there. Will you? No? You're not my dear student? No? आपको पता होना चाहिए. मैं बोल रहा हूँ ना, आप हाँ या ना तो बोल ही सकता है. ये जलेबी की तरह सीधी है यार. सर प्राइवेट में ही ले सकते हैं, खुद एक्सपीरियंस एक्सप्लॉइटेशन. एक्सपीरियंस एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या है? तो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं नहीं, बिट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन लिखो, नॉट ऑल. मोर जॉब, हाँ मोर वर्क एंड लेस टाइम, लेस पेमेंट. ने पहले वो चेक करेगी. अच्छा है तो खुद कॉपी कर लेगी फिर. Hey, there is no word called rund. Rund. Wait, rund. It's okay. Oh boy, written. Good, huh? देखो how. Give me the pen. I'll correct. ये क्या है? Of it. हाँ. ये क्या है? Benefits of the people is the aim of it. अच्छा हाँ. Can write two better. You can take the points from my explanation. Public and private sector दिया है ना मैंने. Organized and unorganized. वहां से भी दे सकता है. पब्लिक सेक्टर में दो एक्सप्लॉइटेशन. No explanation मतलब? हाँ. No exploitation. Benefits are given, medical allowances are given, correct? Pension, retirement pension.
ठीक है, ओन्ड बाय रैन नहीं रे, मैनेज रहेगा उसने भी। अच्छा उधर वही वर्ड दिया है तो मैं तुमसे भी कितना शॉर्ट लिखा। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर गारंटीड। ओके, RANGU, ठीक है, चेक करना जरा। ऑफ वर्कर्स वो भी लिखो। ओके, यू आर delimiting yourself, don't delimit, free flow आंसर आना चाहिए। हाउ डू आई एक्सप्लेन व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, है ना? आई नीड टू चेक comments। क्यों नहीं उठ गया वहां से, उधर यू गो एंड सो कम हियर एटलीस्ट। सारा ने उसने एक ही लाइन लिखा है माय डियर फ्रेंड। क्यों भाई, इधर आओ। आई हैव हाई फीलिंग फॉर यू माय डियर। किधर है? हाँ, सिट सिट सिट, नो पनिशमेंट है। ये रन हर जगह सब लोग ने क्यों लिखा है? ठीक है, बट गवर्नमेंट डज। यू अंडरस्टूड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो सेम है ना? क्यों नहीं है? एक काम करो, यू सॉरी यू कॉपी फ्रॉम योर फ्रेंड और फ्रॉम हिम, ओके, एंड देन आफ्टर द सेकंड लेक्चर यू आर एक्सप्लेनिंग मी व्हाट इज पब्लिक एंड व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। एवरना दिव्या का पढ़ता हूँ, रुको लिसन टू मी, गिव मी द पेन। owned and run by the government has control over the economy. Which economy? Activities involve bank और ये activities है, ये companies है। follows rules and regulation, ठीक है, is to make profits, ठीक है, even this is good, but I am understanding कि और अच्छा लिख सकते हैं आप लोग। क्यों? हाथ में मेहंदी लगाए क्या? लिखो चुपचाप। और रिटेल, ये देखो, how this girl is able to write, because you don't speak in English to me। क्यों नहीं आता? You are studying in 10th standard, my dear। Till last 9 years, how do you speak? Very bad। Hey, after 15 minutes, huh?
Rainwater harvesting. Now let us discuss the first question of you guys, whether the chapter is short or long. है ना? But this chapter normally for map, normally little bit for projects, but now they ask some theories. So we will do only that. Is water a renewable or a non-renewable resource? Renewable. Every year we get it through. Besides that, underground and river, ponds, lakes. We are worried of which water? Fresh water. Out of 75% on the earth, only 97% is salt water. And hardly 1% is fresh water. So is it your duty and my duty to save the water? Yes. Are we doing it at a home? No, very bad. Even at least for those people who do not get fresh water to drink, it's a real trouble. Already historians have written. But future wars can be fought for water. Why you go future? Now also many African countries do not get. Why go to African countries? India also, many interior parts of Rajasthan do not have any drinking water. So how do these guys manage? So next time you open that tap or a faucet and that water is gurgling going, you should think 10 times. ये पानी उसको जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा. Abhi, you speak in English, my dear. Same sentence come again. Tomorrow, very good. You are predicting tomorrow today. So we always believe what is this chapter is going to important for you. When I say introduction, I say I'll be explaining a problem called water scarcity. General language, how do you define this problem? Water scarcity, less of water. For use. Shortage of water. As a no water. How do you manage? Somehow. We always believe developing country like India with the highest population, we need this. Is it equally distributed? Unequal. Some areas like you and me live in a posh flat or a compartment, apartment, whatever you say, with 24 hours of water supply. So for you and me, it's a water scarcity. So out of 24 hours, if I get only water for 2 hours in the morning and 2 hours in the evening, what will happen? Sir, it will be a Mahabharata in our house. Especially लड़का जाके वॉशरूम में बैठ जाता है एंड पापा को ऑफिस जाने का, वो बोलता है जब तक तू मेरा डिमांड पूरा नहीं करेगा मैं बाहर नहीं आएगा. है ना? एंड बाय गॉड्स ग्रेस दे हैव ओनली वन वॉशरूम, नो अटैच बाथरूम फैसिलिटी. लड़का बोलता पापा मान लिया क्या? नहीं बेटा. मान लिया क्या? नहीं बेटा. मान लिया? हाँ मान लिया, जल्दी बाहर आ. And what will be your mother doing? Catching the water everywhere. Almost a glass, dabba, bottles of number correct. What does it mean? We are running out of the problem called water scarcity. So when you want me to tell what is this chapter, we will not only study what is water scarcity, we'll try to find out solution for it. What is that solution according to you? Okay, if I'm not saving? Construction of dams. The word that I've written here, where it is? Multi-purpose dams. What are multi-purpose dams? Dams which can do many purpose at the same time. Electricity generation. Or क्या? Supplying water to the fields. Or क्या? Now that is electricity, na? What else? Sightseeing, fishiculture, canal water irrigation, and dams circulating the water, storing the water. So India have major 12 projects, major. I can say Hirakud, Damodar, Bakra Nangal, Jaikwadi. बस आपको अच्छा knowledge है, छोड़ अभी आगे जा. अभी Mumbai has 3 dams. If this coming monsoon, if that dams full of water, till the next monsoon, Mumbai will not require any water. But you and me, हमारा टंकी ऊपर और नीचे भरा रहेगा. I ask you guys, what is the source of water? What do you tell me? My building watchman. How come he is the source?
ओए, पानी बंद होता तो वही ओपन करता है ना. Is he the source? Then who? Who? Rain. Rain is the source. Yes. And how is our rainfall? Uncertain है ना? What is uncertain rainfall? Both in time and quantity. It may come at any time. It may go at any time. Quantity, 4 months of rainfall, it gives at 1 month. Can we store it? Not possible. So that is why we'll be studying. She asked me, sir, what is this? It is rainwater harvesting. What is harvesting of the water? So harvesting of the crops I have heard, but not about water. How? Wait. Ame's answer. Okay, how do you collect or where do you collect? ये balti rooftop. Very good. I'm happy. Very good. Yes, there is modern method and there is traditional method. Traditional method, आप बोलते we are ultra modern people. Don't teach us tradition. ये भाई बाल्टी से पूरा साल भर भर के रखा है. Which is the balti, the small one or the big one? So we always believe this rainwater harvesting in our country, especially now people know it. During the time of rainfall, she said rooftop. All the buildings with the terraces, the pipes have to be connected. Instead of going to a drain, instead of going to a gutter, let it go to a pit. You know what is a pit? Where the water will go to underground. Whichever water filter you have at your house. But there are layers of the soil as the best filter. You go to South India, especially in Kerala, every house will have a well. When Maharashtra was of a time, people generally drink well water. You know, well, the safe water we can have. House को properly cleaning वगैरह करना पड़ता है. मालूम पड़ा सर, मेरा पुराना 15 जूता उसमें डाल के रखा है. And बोलते सर वो बहुत अच्छा पानी है, तू ही पी ले, मैं नहीं लेगा. So we always believe this underground water is the best. But what is happening to my underground water? That is also getting depleted. We are using, what is that? Borewell, na? My neighbor put 150 meters deep, not meters, sorry, feet. So मैं बोला 150, I'll go for 250. My new neighbor goes for 350. The other neighbor 400 feet डाल दिया पानी. What are we doing? Depleting the water resources. If the rainfall is less, what will happen? Groundwater will come to an end. So now certain government, not certain, Tamil Nadu government has made compulsory that every house will have an underground water circulation pit. You know what is a pit? That's circular. So you and me do not understand the importance just because you are provided with 24-hour water supply. Just imagine maybe like 10 years or 5 years, Indian rivers have dried up. Rainfall has not shown the face for last 5 years. What we will become? So dry desert. है ना? राजस्थान का practice अभी से start करते हैं. We have to adapt ourselves. वे हमारा बच्चा एक 10 मिनट लाइट नहीं है ना, यार लाइट आने के बाद ठीक है, चादर ओढ़ के एसी ऑन करके सो जाता है. What does it mean? We are not adapted to changes, but there's global warming, lack of rainfall, and underground water going deep puts a big trouble to which problem? Availability of water. India being an agricultural country, don't you think water is very important? जितना भी fresh water मिलता है इंडिया में, they say more than 60% is used by farmers only. Why they require? Why they require? For plants. You might have seen now also, if you go to certain villages, the pond is full of water. Let the farmer do one cultivation. Pond है but पानी नहीं है. पूरा पानी उसने खींच लिया. Second, they are waiting for 9 months. And why is the water pipe? Pipes are there. When you open, big gust of air is coming. और हमारा बच्चा बलून लेके जाके उसका माउथ में डालता है और टैप ओपन करता है और बलून हवा भर जाता है. बोलता है वेरी गुड, पानी तो आता नहीं है, चलो बलून भरने काम आता है. एंड दैट इज द टाइम द पॉलिटिशियन इज कमिंग. आपके गांव में मैं पानी का नल तो डाल दिया, दूध का नदी बहा दूंगा मैं. तो आप आके कान पकड़ के लेके जाते, इधर आप दूध नहीं चाहिए, पानी तो आएगा, आ जाएगा, आप मुझे वोट डालो. पिछला टाइम भी यही बोल के गया था. So we always believe there are so many false promises. But what is the general cause of dryness? Why? People say deforestation. Is a direct cause. The more trees you are cutting, the more is the rainfall less.
correct? Oh, sorry, the less is the rainfall. Then we understand there are global changes. What are global changes? Earth is getting heated up. So water evaporation faster. Unless and until you do not provide them a green belt. You know what is green belt? Rainfall is not going to come back to India. You go to Kerala, out of 12 months, they get good rainfall, huh? Very good rainfall for 7.5 months, 8 months. No doubt in South, that is a lush green area. आप exact opposite आंध्रा में चले जाओ, lush dry area. तमिलनाडु में है कुछ जगह पर generally dry. कर्नाटका, no need at all. They are all rich, coal field, mines, उसमें पड़ा है. Then come to north side, except Bihar and little bit of UP, other parts are drying up. Then go to western Rajasthan, which are already desert, and desert is becoming higher and higher. Why? Lack of water. So we will be understanding first introduction, importance of water. I'll be giving a small line definition, water scarcity. Then we'll do meaning, advantage and disadvantage. And this is something new. New rainwater harvesting. So if you have written in the margin, just put an arrow and write for 2 lines for this. Water scarcity. Water scarcity. I'm giving meaning. According to, if you have read the textbook, you might have heard this person's name. Who is he? This person. Falcon Mark. It is. I've just converted, sometimes it is 10 liters per day. He has given, then we will write our own definition. Individual ना इधर लिखा है ना भाई भाई, ये देखना भाई. क्या है? Relax, cool, cool. I will ask Divya to explain this, है ना? In English. Or shall I ask Amya? I'll say very simple. Morning till evening, you need to do a lot of activities. Washing, bathing, है ना? Cleaning, watering the plants, throwing water on each other. Only during Holi, है ना? If you are not getting this quantity of water, you are suffering from a water scarcity problem. Who is saying? Falcon Mark. Oh, Falcon Mark. Where did he fall from? है ना? Sweden से इधर गिरा है direct. But Indian बोलते सर Falcon Mark का definition से मैं इंडिया में है ना? So I say it is insufficiency of water to continue your daily basic activities. Shall we write that? In simple lines. In simple lines. He's keeping an eye on him. पहले भाई देखते रहे उसको. हाँ, कुछ गड़बड़ कर रहा था बोल मुझे. In simple lines, it refers to insufficiency of water. Careful with the spelling. It refers to insufficiency of water. To continue daily
नेसेसरी, देखो डेली भी बोला और नेसेसरी भी बोला, है ना, एक्टिविटीज लाइक बेदिंग, washing, cleaning, etc. Per day, per individual, per day, per person. Full stop. Then you write causes. Now you tell me what will be causes. Deforestation. Okay. Wasting of water, excessive use. Wait, we'll give overutilization of water. I say urbanization. Is it urbanization? What is urbanization? Anji? What is that urban? Okay. I don't know which year it was. When I came to Navi Mumbai first time, I remember I saw a big buffalo and a cow on the middle of the road. I came by bus, not by car or two-wheel. My dad was with me. And that bus driver was honking. And that buffalo, again he was honking. बोला जाना साइड से, तो मेरा पापा बोला 21st मिलेनियम सिटी, मतलब किधर गाय और भैंस बैठा तुम 20, एंड देन बेचारा बस वाला नीचे आया, फिर है अच्छा वहां से, हाँ पूरा बेचारा, हाँ अच्छा ठीक, फिर जाके बस स्टार्ट किया, फिर हमारा बस डिपो में घुसा, फिर हम पापा ब्रॉट मी टू दिस कोपर कैन ऑल्सो, मुझे याद है वो डीमार्ट था बड़ा सा, बोले पापा कोपर कैन बिग एरिया, तो फिर हम लोग ऐसे ही किसी फ्रेंड से मिलने आए थे, पापा बोलते सर पानी बहुत इधर प्रॉब्लम है, मैंने बोला मतलब क्या है, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, बीच में ड्राई, एंड उनका बिल्डिंग में बोरवेल डाल के रखा था, अभी बिल्डिंग में बोरवेल डालेगा तो व्हाट इज दिस, है ना, कड़कड़ कड़कड़, मैं बोले ये क्या है, बोरवेल का पानी पीने का नहीं साहब, सिर्फ हाथ में धो, पूरा नमक का पानी है। आई स्टिल बिलीव सेक्टर आई थिंक 7 और 8, उसके आगे कोई पब्लिक, घर तो दूर, कोई आता भी नहीं था। सर हमारा कोपर कहने के बारे में कुछ मत बोलो, है ना, नाउ देखो क्या नहीं है ना, नाउ आई थिंक ऑल गुड, टू गुड, यू कैन से टू गुड। सो देन वी वेंट टू दैट पाम बीच एरिया, ना पाम दिखा ना बीच दिखा, ओनली पूरा ओनली पूरा स्वैम्प, पापा बोला कॉस्टलीस्ट एरिया है, ये कीचड़ को कोई कॉस्टलीस्ट एरिया है। Till that Belapur, after that there was no population at all. Hardly 1-2 कार आता था, वो भी दिन में, रात में तो वो भी नहीं। तो क्या है, पाम बीच रोड, पैच लॉन्ग, हमारा बिल्डिंग में तो और भी मजा था, सुबह 2 टैंकर, शाम को 2 टैंकर पानी, यही इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी नहीं रहता था, मोस्टली आता ही नहीं था। So what does it mean? Now you come to that Palm Beach. Acha, Palm Beach. The area is developed. Buildings are multi-story building now. Consumption of water might be 10 times more. Correct? What I'm referring to? I'm referring to urbanization. You go to some cities like Bangalore, vertical buildings are less, horizontal expansion is more. Every house will have a well, if not a bore well, and Bangalore, I think municipal corporation bhi pani deta hai, isn't it? But I feel I salute BMC and NMMC. Why? Itana population hai, itana movement hai. Now they are managing perfectly till the rainfall comes. उसके बाद कोई मैनेजमेंट नहीं है, सब पानी के साथ लेके जाता है। नावी मुंबई फिर भी ठीक है, गो टू मुंबई साइड, 2 घंटे का हेवी रेनफॉल, देन यू आर मतलब क्या है, स्विमिंग पूल है और क्या, बिल्डिंग के नीचे पब्लिक उतरता नहीं है, फिर बोलता अरे बोट मांगा, बोट हमको जाने का ऑफिस। What does it mean? The drainage problem starts.
Because however rainfall is high, in my own building there was water stoppage, but heavy rainfall outside. Are you understanding how contradiction is the situation? घर के बाहर मैं निकल नहीं पा रहा था, बट घर के अंदर पानी का सप्लाई नहीं है. और हमारा बिल्डिंग वॉचमैन, साहब रुको साहब, वो पानी बंद होने के बाद मैं खोलेगा. अरे बंद किधर होगा, पानी ही नहीं है इधर. हाँ साहब, एनएमएमसी ने पानी नहीं छोड़ा. अरे वो गटर का नहीं साहब, वो पानी तो ज्वाइन कर, एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा. So we feel this cities, industries, they use lot of water. Can we generate water every time? Not possible. So the only solution, make the people understand. Do you think our Indians are very good understanding people? Oh, ye baba ye kya? You're not understanding people. अच्छा पहले झगड़ा करेंगे, कैसे करते हैं? And then we come about United India, है ना? है ना, मेरा भारत महान. फिर हम दूसरे लोग अलग अलग जहां पे से आते हैं. In American signal, 2 Indians were fighting. One was from south and other was from north. South Indian को हिंदी नहीं आता है, North Indian को English नहीं आता. And this American fellow came in between, settled down both. Then he asked, you come here? You are from India? Mera Bharat. South Indian, you come here? Why? Ruk. You are from India? Oh, Mera Bharat. And why both are fighting? We love each other. That's we fight. So what does it mean? When I'm putting my dustbin and garbage into my neighbor's balcony, I love the balcony, sir. बट मेरा नेबर मेरे से भी ज्यादा मेरे पर लव करता है. बोले कैसे? कल रात को ही डाल दिया उसने कचरा. मीन्स सर वी शेयर. सडनली केयरिंग में शेयरिंग है सर. बोले क्या शेयर करता है? कचरा और है ना. Yesterday my car was fully drenched by the opposite wala neighbor who is pouring water. I was waiting for his car to come under me. ओके सर्फ पर पूरा पानी उठा के डाला नीचे. ये क्या? अरे तू नीचे कैसे? गलती से डाल दिया मैंने. वो गलती होने के लिए 1 घंटा मैं बालकनी में खड़ा था, कब आएगा, है ना. ये गलती मैंने कल किया था, तो आज मैंने कर दिया, क्या फर्क. करेक्ट. सो टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इज वेरी ट्रबल. बट हमारा कोई नेबर आके कुछ झगड़ा करेगा ना, वेरी चलता है. कल मैंने भी किया ना इससे. And when my children are studying, the opposite neighbor is putting a karaoke sound. And that beats जो आता है. फिर सर वो बच्चे का एग्जाम है. हाँ सर पढ़ो ना सर, मैंने कर दिया. सर वो बच्चा पढ़ रहा है. हाँ पढ़ो. मैं बोला जरा वॉल्यूम. हाँ आज ही लाया मस्त है ना. बोले विंडो. अरे बंद करो सर, क्या फर्क पड़ता है. बोला अच्छा तेरा बेटे का एग्जाम कब है? अगले हफ्ते. ठीक है रुक जा मैं देखता हूँ. है ना. देन पापा विल बाय द बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सिस्टम. सर कल आपका बेटा का एग्जाम है. हाँ बहुत पढ़ाई कर, बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ. तो फिर अपना पापा म्यूजिक स्टार्ट कर. एंड ये कम सर एग्जाम है ना. अरे म्यूजिक के साथ पढ़ने बोलो. मेरा बच्ची तो मैथमेटिक्स तो म्यूजिक के साथ ही कर रही है. बोले कैसे? कल तू बजा रहा था ना. सो हाउ टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी? वेरी सिंपल. मैंने नेबर का पाइपलाइन काट दिया. अब तक तो आंटी सिर्फ दूध चाय चीनी मांगने आती थी. हाँ जैसे टिंग टोंग 2 बकेट खड़ी है भारत माता की तरह. सर वो 1 बकेट. ठीक है ये लो दूसरा भी. व्हाट डज इट मीन? पाइप कनेक्शन. कल मेरे हस्बैंड काट के गए. So water scarcity to be understood in a best possible manner. How? If I'm not able to use the water for daily activities, I'm suffering. What is the solution for this? War. War for water. Simple hai. समझाओ. And show some pictures. Which pictures? Water scarcity of Rajasthan. Lady is carrying one big pot of water and she is walking miles. तो तुम्हारी मम्मी स्टार्ट हो जाएगी. हाँ बचपन में ना हम लोग का घर में. फिर पापा बोले मेरे घर पे तो पानी ही नहीं था और आप लोग कितना गिफ्टेड.
बेटी बोलेगी ये पिछले 15 साल से यही डायलॉग मार रहा है, कुछ नहीं। पॉकेट मनी पूछते भी तुरंत वाटर स्कैसिटी में घुस जाता है। पॉकेट मनी का और वाटर स्कैसिटी का संबंध क्या है? हम लोग ना 2 रुपया देके एक बकेट लेते हैं, बकेट तो 100 रुपए का, बकेट में पानी भरने का, एंड देन यू हैव टू कैरी लॉन्ग डिस्टेंस. So to say that India is now is having water scarcity as one urgent problem, maybe in future the majority of the people might suffer. So let us get into the volume. Instead of writing, we can go directly there. You come down to page number 49. हाँ वही कर रहा हूँ ना. Am I coming here? She becomes so good, huh? Very good, very good. Very better. Don't have the volume. Okay. Hey, look at that page number 49. Is it 49? Causes they have given. Natural factors, qualitative, quantitative, वो छोड़ देंगे. We'll write growing population, industrialization. Okay. So causes के नीचे पहले लिखना natural factors. Notebook में लिखना. Natural factors. So besides reading there, you can write short points. है ना? Lack of rainfall. Correct? और क्या? Increase in overall temperature. C. Underground water depletion. D. हाँ वेरी गुड भाई साहब, तब से वो एक ही पॉइंट पकड़ के. Deforestation. Yeah, and A for afforestation is deforestation. Then write next man-made factors. Urbanization. अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, urbanization. Then industrialization. Rapid growth of population. Industrialization में ये सब आता है ना, waste of industries. नहीं, more industries which require water. Why you find it difficult to pronounce the word? What? What? I had to bounce it up. What? Then और क्या है? अच्छा ठीक है, न्यू प्रॉब्लम. Oh, idea. Utilization तो urbanization और industrialization. हाँ, उसी को मैंने जरा simple points में. What is happening? I should send Divya to any hospitals where cancer patients are lying down. All the patients will be down to the ground. है ना? She got a godly gift of laughing. है ना? हम लोग राइट जगह पर यूज करते हैं. जो कल जाने वाला वो आज ही ऊपर चले गए. इतना हंसाया मैडम ने.
अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। सर डाटा में मुझे खरगढ़ किधर यू हैव गॉन भाई? अच्छा आपका कोई रिलेटिव? हाँ फर्स्ट अभी चल रहे भाई। आप मत जाओ ना, आप छोटे बच्चे हो। वो नहीं जा रहे तो बताओ कि 5%. देखो I feel either natural factors or a man-made factors. Once you spread the awareness, they become aware. You know what is awareness? Awareness. ये कुछ लड़कियां मुझे बोली सर gossiping. Is it? Is it true? Is it true? I will tell one secret to this bacha, and I'll say don't tell to anybody. Everybody. हाँ क्यों? अच्छा good. हाँ. Then the bacha will be spreading to 10 different people with an underlined dialogue. Don't tell to anybody. हाँ. But for good things they will not spread. बोले ना वो लड़का आया था, वो लड़की बहुत अच्छा लड़का है, बट वो लड़की है ना, हाँ दोनों बट बहुत अच्छा है, और उसने मम्मी ने इतना जूता से मारा बट बहुत है ना, किसी को मत बताना ये मैंने बोला। हाँ अच्छा दूसरे क्लास में भी, और कल है ना प्रिंसिपल आई थी ना, इतना झाड़ा वो टीचर को, क्या हुआ पता नहीं। माय बेस्ट टीचर ना, माय बेस्ट टीचर, शी वाज क्राइंग बैडली, टेस्ट ट्यूब में पानी भर गया था। केमिस्ट्री टीचर वेरी गुड। हाँ तो देन आई से वाटर स्कैसिटी आप डिस्कस करो सर, मुझे ये सब भी कोई टॉपिक है क्या? नेबर कल किसके साथ गया, कल रात को किसके पीछे आया है ना, कल आंटी ने क्यों अंकल को झापड़ मारा, और अंकल बाहर आते भी हंसते हंसते क्यों आए, वो सब कुछ हंसते तो आए वो ठीक है, अंदर से बाहर आते समय मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, मार खाया अंदर ये है ना। तो वी ऑलवेज फील हाउ टू स्प्रेड दिस मैसेज, टेल देम दैट टुडे यू आर एंजॉयिंग वाटर, टुमारो वो बोलता कल भी जाएगा ना, इसमें क्या, मेरा बिल्डिंग में इतना बड़ा टैंक लगा है पानी नहीं आएगा, then we have to save the water. देखो when I say today water conservation program, I tell the people that India have major rivers है ना, like we have Ganga, correct? हाँ यमुना, हाँ correct, he's right. अरे हंस क्या रहा है, करेक्ट ही तो है यार, जोक पे ऐसा ठीक है बट कुछ भी मैं हंसता रहता। ऐसा गंगा वी आर प्लानिंग और नॉट प्लानिंग, ये चालू है, क्या है गंगा एक्शन प्लान 1, 2, 3, we are into 4. Ganga action plan means they are purifying the water of river Ganga. और करने वाला हम ही तो है ना, and government spend crores of rupees in all these projects, crores. बट फिर कोरोना जब आया 3 महीने के अंदर गंगा का पानी इतना प्योर हो गया जो 25 साल पहले प्योर था, तो बच्चा थैंक्स लेटर लिख रहा है, कोरोना, डियर कोरोना, why only you came after 100 years, please come every 10 years है ना। Why Ganga water was so pure? Because all the industries were closed, all the sewages were stopped. So whenever we say we have good river water like Ganga, Yamuna, Brahmaputra, but they are suffering from what? Pollution. Which pollution? Water pollution. So we are directly saying although we have good river water, but we are only polluting it. So what we have to say? Sorry, the problem of water scarcity is increasing mainly by natural, we understand, but more by, so you and me have to control. तो तुरंत लड़की बोलेगा मैं क्या कर रहा है, spread it, awareness, encourage it, tell your own parents when you wash the vegetables, when you wash the fruits, don't throw that water, same water can be put into plants, है ना। कल मेरा कार को सर्दी जुकाम हो गया है, कैसे, I open the tap and put the tap on the head of the car,
एंड कार बेचारा 2 घंटे तक स्नान कर रहा है, वो भी विच वाटर? फ्रेश वाटर. यूज द वाटर विच आई एम यूजिंग फॉर क्लीनिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग, उसमें सर्फ तो रहता ही है. यूज दैट वाटर. हाँ सर, इतना अच्छा. हाँ. Now we have some new agricultural technique where water is minimum. In fact, certain crops are grown with stones and little bit of fertilizers. In Nature's Fresh, सुना है? That's a company which grows tomatoes, spinach, many brinjals with water. No, without water only. And no chemicals. But the fruits and vegetables are a bit costly. But ठीक है. So Government of India is also trying new and new technique. है मैं दिखाता हूँ. हाइड्रोफोनिक्स एंड पॉलीफोनिक्स बोलता है. पानी जाता है बट ओनली पत्थर के थ्रू जाता है, मिट्टी भी बहुत मिनिमम रहता है. तो नो केमिकल्स, नो फर्टिलाइजर्स, सो न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. यूरोप हैज गॉन वन स्टेप अहेड. दे गो फॉर वर्टिकल एग्रीकल्चर. यू नो व्हाट इज वर्टिकल? अगर मेरे पास आधा एकड़ का जमीन है, आधा एकड़ वो लोग 3-4 लेवल पर रखता है. आई विल शो यू सर्टेन टेक्निक्स. So we all believe scientific innovation is the only solution for solving which problem? Water scarcity. Converting the salt water into which water? Drinking water. What is this Gulf country doing? Do they have fresh water? They have mainly saline water, but they are having effective method. India ने भी start किया था. Start करके 3 महीने में कंपनी को लॉक लगा दिया क्योंकि वो काम नहीं करता. But India का अगर रेनफॉल भी अगर रेगुलर मिले, we are good with our water. Okay. So let us go ahead. Natural factors जब natural factors अब read कर लेना and come to this heading. What is that? Effects of industrialization. She will be reading. And pop लिखा था ना? Population. हाँ. She is reading population. Everyone pick up the pencils. Page number 50. Come on, read. Rapidly growing population results in greater demand for water and unequal access to it. A large population requires more water not only for domestic use but also to produce more food. Water resources are. देखो, more food मतलब उधर लिख लो, agriculture. Go ahead. Water resources are exploited to expand. Exploited to expand. अच्छा ठीक है. You have to create some punctuation while reading ना. Go ahead. Go ahead. To expand irrigated areas and target agriculture to higher food grain production. Underline that word, higher food grain production. My dear, such a nice reading. Food grain production. Go ahead. Excessive use of tube wells for replacement falling groundwater levels. Underline the tube wells. This adversely affected water availability and food security. How do you pronounce that word? It is availability. Come again. And underline that word food security. Could anybody tell me what is food security? Very good. But how do you define it? मतलब आज तू घर जाके लंच नहीं करना है. Nah. What else? What else? There are 3 A's available. Sorry, 3 A's available for food security. Availability, accessibility and affordability. आपको पूरा 12 महीना खाना मिलना चाहिए, मतलब गरीब लोगों को, हमको तो वैसे भी मिल जाए. Affordability, prices. Accessibility, everyone should have the access. So put that word in your notebook, food security. Because sometimes they might ask you in MCQ. Food security. Meaning लिखना. लास्ट टाइम हमारी तो फिर भी तो नहीं बोला तूने. बोला तो स्पेसिफिकली बोला ट्रिप वाले. ठीक है, तो अभी लिख लेना यार. Refers to notebook. तूने अभी तक टाइटल डाला क्या? अरे वाह. Refers to availability, affordability. Any spelling you need, ask me. Affordability and accessibility. ACC.
ESSABILITY लिखा accessibility of food grains to all the citizens throughout the year. Food grains throughout the year. Do you really think in India people suffer from this problem? Yes. Really? Because of the high Okay, 1 second. low production, low animal, Come on, others. low production. Because of low production, yeah. Agriculture, okay. Dekho, I feel there is wastage of food in our community. Correct? Eh? You have attended weddings? You have attended weddings? ये छोटा सा उम्र में weddings क्यों जाते हैं? है ना? And lots of parties, birthdays, the food gets wasted. Now in India, Mumbai, Navi Mumbai, there is so many NGOs are working. आप एक सिर्फ एक miss call दो. They come with their van, take the food which is left. ऐसा नहीं कि आप खा रहे हैं तुरंत plate छीन के लिए. Leftover food and they renew it. Renew it मतलब क्या करते पता नहीं है. And they give it to the poor children. Don't you think you are doing a very, very noble job? कभी किया है आपने? लेकिन पूरा खा जाता हूँ। अच्छा ठीक है यार आप पूरा खा जाता जो नहीं खाता है. The best thing I do, I don't attend any marriages. Even if I go any function or party, उतना ही फूड लेना जितना मैं खा सकता है. वो मूवी 3 डैश है ना, इधर एक इधर एक इधर एक पूरा प्लेट भर के रखा है, खाना तो कुछ नहीं जाता. एंड फिर जाके डस्टबिन में ऐसे डाल के. यू नो योर कैपेसिटी, उतना ही लो ना. यू डोंट नो योर कैपेसिटी. हाँ देखो इंडिविजुअलिटी बहुत रिफर्स है. तो क्या हो गया ना, शी इज मेंटेनिंग गुड. लड़की है भाई, तेरे जैसे ऐसा खा के बनेगी तो है ना बच्चा. यू आर अ हेल्दी पर्सन. गुड, इट इज गुड. वेर एम सेइंग नाउ. एंड अभी तो आपका उम्र ही है जितना है ना, हेल्थ बस बनाओ. सो वी ऑलवेज बिलीव. ओए ओए ऐसा कुछ नहीं. क्या हो गया, सेकंड लेक्चर मोर लाफ्टर. So when I say food security in India, more than 60% of the people do not enjoy the food like you and me. How do you enjoy the food? मम्मी चैनल चेंज करो. इधर फूड रखा है आधा घंटे से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उधर चैनल पे इम्पोर्टेंट चल रहा है. अच्छा, वेरी गुड. First of all, 2 things you have to switch it off: your mobile and your TV. हाँ. And where are the poor people doing? वो तो बेचारा देखता रहता है ये खाना क्या मिल रहा है. हाँ. There is a beautiful movie called Lagan, if you watched. Old movie related to cricket. How we learned cricket from the British people. हाँ. Tea was a luxury commodity for the British. Evening में वो बड़ा सा फ्रॉक पहन के वो लड़कियां आती थी और ये लोग अपना हैट वगैरह लगा के, हाँ ऐसे ही होता था. एंड बड़ा सा राउंड टेबल, वेल माय डियर कम फॉर द टी एंड और हमारे गरीब लोग ऐसे हो रहे, ये खा हो रहा है कोई मदिरा ना, चाय पानी कुछ तो पी रहा है. एंड क्रिकेट हम लोग ने ब्रिटिश से ही सीखा. लगान मूवी में देखो कभी, जैसे ये डंडा क्या होता है, विकेट, और ये गेंद. So when I'm saying that Britishers have looted India so many years, but now we are at the position we are going to London, defeating the London team, and हमारा गंगुली टी-शर्ट निकाल के मुंह पे रख ले. पब्लिक बोलता है नहीं. Because one English cricketer done it in Mumbai. I was watching that match live in Mumbai Stadium. Andrew Flintoff. And when India was defeated in the last ball, he removed his t-shirt and threw a. उन्होंने पब्लिक अरे पैंट नहीं होता था ना. एंड तुरंत हमारा कैमरा जूम, ये क्या बना है, VIP, ये तो हमारा ब्रांड है. Why I'm saying this? Because Indians are coming out of that trouble. We had the famous Bengal famine. You remember Bengal famine? Lakhs of Indians lost their lives. And ये famine was not a natural one. It was an artificial one. अगर rainfall नहीं हुआ, we understand. Crops failure हुआ, we understand. Floods हुआ, we understand. But the British Governor General who was ruling India, he sent all the food grains to London.
And when the commission was set up, उसने बोला sorry, by mistake मैंने सारा भेज दिया. And I can show you the pictures of that Bengal famine. ब्रिटिश लोग ने लिखा था famous Calcutta Bengal famine. मतलब उसमें famous क्या है? Our Indians have lost their lives and British is enjoying tea. Well, how many Indians have died today? And the report saying only 15 people. Ah, that's a small number, my dear. What's a small number? 15 people have died there. 15,000 people have died. So whenever we say food security, you have to remember which famine of India? Bengal famine. Yes, please, go ahead. Intensive industrialization increasing Hey, what does that word intensive means? हाँ उधर लिखो rapid. Less time में more industry start किया हम लोग. Hey, where is your wallet? You didn't bring. You got it? at work. Who is reading it? Carry on. ठीक है. तूने भी नहीं लाया लगता. Where is yours? बहुत hardworking बच्चा है. Carry on. It's okay. It's okay. Carry on. Carry on. Who's reading? हाँ. Pressure on existing freshwater resources. Exerts. You are also too good in English. You write more pressure. Viraj, read the next point. Read the next point. Water scarcity she is reading. What is that line we are doing? Page number 50, effects of industrialization. Come on, Viraj. Last point. No, second last. Increasing urbanization add to water and energy requirements. Hmm. Further aggravation the problem. What is aggravated? Increased. Added to the problem. Next. The fragile water resources are being What is overexploited. fragile? उधर लिखो anytime can become dry. Fragile. आज है पानी और 2 दिन के बाद पानी तो निशाना ही नहीं उधर. Fragile. Go ahead. And have caused their depletion in several cities. Underline several cities. In Maharashtra, all the parts of Maharashtra gets water supply. Yes. Yes. Which part of Maharashtra? Marathwada, Vidarbha. They don't, Vidarbha, western part of Maharashtra, I think. They do not get any water. Dry. Forget about eastern part of Maharashtra. Vidarbha, फिर ये कुछ local people से पूछते तो लोग बताते हैं. Parbani, Maratha village only. I don't pronounce Marathi too much good. Hey, you are Maharashtrian, Viraj? No, sir. Why, man? I am Bihari, sir. उसीलिए तू सब पे भारी है. चलो go ahead. तो बिहार कैसा है लालू जी? अच्छा है तो कभी बात करो हमसे लालू जी से. चलो ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक प्लीज रीड विराज. Conservation and management of water resource. Okay, everyone put the heading. Hey, why are you laughing? Very good reading, Viraj. I'm enjoying it. So everyone write water conservation. Oh, write down. Water conservation, I'm giving meaning. Enough. Boy. I'm saying writing, write down. Water conservation. Write the meaning. Refers to careful, judicious. I'm writing those words. रुक जाओ और 2 मिनट के बाद और कोई पूछेगा. Better I write it on the board.
Let me remove myself from here. Chalo, copy down this. This is conservation of water. Oh, first lecture, all were sleeping, I think. Good, good. I have a question. सर अभी हिस्ट्री की पीरियड फर्स्ट पीरियड में आराम से बैठेंगे फिर लास्ट पीरियड में आराम से सोएंगे ये उल्टा होने वाला है यार इसमें देख ले ले ये what she does? What she does? During the lecture? yes he leaves and then they इधर demons अच्छा है ना? मैम इसलिए तो वही तो प्रॉब्लम है हिस्ट्री पढ़ाती है वो ये मैम हिस्ट्री पढ़ाती है इसको ही सोने के लिए नहीं ऐसा नहीं बोलता that's wrong यार. चलो write down conservation. Viraj written. राइटिंग सर. Good boy. इतना जल्दी तू लिखना स्टार्ट कर दिया? नहीं, बीच में एक से. अच्छा ठीक. Write down. This is the meaning. लिख के दिखाना विराज Hey, where is your notebook? You didn't submit for correction. दिखा दिया था. अरे मैं कितना वेडनेसडे गया और कितना थर्सडे आ गया? 3. Boy, I have to send some peon from my office to your house. Shall I? नो सर. एक पोस्टल चार्जेस उसके माथे पे लगा के भेज दे. जल्दी कर. ओके देखो कंजर्वेशन का मतलब दिस वर्ड एवरीवन वी अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. Judicious, use it how much you need, and what is planned, whatever water resources, let us use it for longer time. How do I say longer time? If I'm not wasting it, what I'm doing it, I'm collecting it. Because we are talking about so much resources, but I feel always you and me waste the time like anything. Hai? Right? Hai? Achha, she doesn't. Carefully utilize the time which is available now. Maybe after 30 or 31st year, 9 days you are getting, if the schools are opening on 10th or 12th. What are we going to do 9 days? Ruko sir, huh? What is she saying? Acha, projects hai. रुको सर अभी तो वेकेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा. क्या रे विराज तेरा कभी है स्कूल? अच्छा सेम. 12 गुड. तो 9 days मैंने सुना तू कश्मीर जा रहा है. कश्मीर? Are you going to Kashmir? नो. I'm asking, will you go? नहीं. क्यों रे? So we always believe when we are saying ki conservation, because the problem of which is more in India, water scarcity. Because we are the people, after the problem comes, we'll run for the solution. And before the problem, we are just sleeping. After getting failed marks in one subject and 2 slaps from your dad, then you try to work hard. उसके पहले बहुत किया ना, टीचर ने पूरा मार्क्स कट कर दिया, मेरा गलती थोड़ी. पेपर इतना डिफिकल्ट सेट किया, कितना लोग फेल हो वो मालूम नहीं, मैं फेल हो गया. देखो पापा और मम्मा ऑलवेज आस्क हु इज द टॉपर इन योर क्लास. तुरंत बच्चा बोलता आई एम द टॉपर. तू तो फेल हो गया. टॉप में भी फेल में ही हुआ है ना. मीन्स व्हाट? पूरा क्लास. बट मालूम पड़ा मम्मी को, मालूम पड़ गया पूरा क्लास को अच्छा मार्क्स मिला, रीवैल्यूएशन के लिए डाल दिया. देयर इज मिस्टेक इन. आर वी फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन और ओनली हाइडिंग द ट्रबल? Instead of hiding the trouble and take it to next 10 days, speak it out. Let us find the solution. Abhi when I say Ganga action plan here, so many plans, we are into the 4th plan. Still, there is a lot of unwanted elements which are wasted and dumped into which river? If you have gone to a city called Varanasi, suna hai? Now, what is the speciality of that city? Where it is in? Kashi and Varanasi, almost same hai na? Yeah. It is one of the oldest city in the world. It has a history of 500 years. I haven't gone. I have seen it in televisions. They said that Ganga Aarti that they do it every evening. More than 500 years they are doing it. 500 years. What does it mean?
There are so many people who wanted to be cremated in that area only. Every 2 minutes, one body is cremated. मतलब उधर एक ये है मतलब there's a saying, when your body is cremated in that place, you are not going to come back. मतलब you are going to get moksha, life and death से मैं बाहर निकल रहा हूँ. बच्चे ने बोला हाँ मैथ्स लेक्चर से बाहर निकलते मुझे मोक्ष हो जाता. साइंस लेक्चर पूरा लाइफ का पनिशमेंट. SST तो पूछ ही मत, ऐसा नींद आता है ना मुझे. एंड मेरा टीचर भी मेरे सर पे आके टीचर, तो मोक्ष तो दूर, आंख बंद करने भी नहीं होता है मुझसे. So we always believe this water conservation is a very simple program. Why very simple? Don't wait for the government to announce. Can you and me do it? Yes. If everybody does their work regularly, is there any police need to be come in? No need. You need a class monitor in your class. हाँ सर, वो खुद indiscipline है और हमारे ऊपर सर पे चढ़ता है. Understood? चलो, go ahead. Viraj has done completing, so we will go with conservation. She is reading. And management. Importance. Due of the limited water available and that too is unevenly and polluted, there is a need to adopt some conservation measures for balanced and adequate supply of water. Underline that word, balanced and adequate. Why is that meaning of the word balanced? Not all parts of India gets regular water, है ना? अगर हम अपना water को save करें, we can give it to a neighbor, correct? Like if you have gone to the place called Ran of Kutch, where it is? Gujarat, the driest part of Gujarat, in fact. You're from there, no? Ooh, wait. You've gone, is it? In fact, I want to visit that area. कैसा है? बहुत गर्म है. उसमें भी हंसती. अरे कैसा है? इतना बड़ा हंसी के बाद नीचे से छोटा सा ठीक है. So like western part of Rajasthan, Jaisalmer, fully driest. So there are so many states in India who are sharing their electricity. But there are so many states which has good water, but they don't want to give it to another. We have 2 South Indian states fighting. Which 2 South Indian states? Karnataka and Tamil Nadu. What is the name of the river? Kaveri. And then suddenly Kerala jumps in between. Oh, Kaveri में हमारा भी हिस्सा है. तो तमिलनाडु बोला पिछले 15 साल से मुझे नहीं दे रहा, तुझे कहाँ से? So this is the unity in India. है ना, एक स्टेट दूसरा स्टेट को पानी नहीं देता है. ओके, चलो. हाँ अच्छा, उसके लिए इतना लेफ्ट एंड राइट हो रहा था. हाँ ठीक है, आराम से जाओ और जल्दी आ. हाँ, लेट्स गो अहेड. हाँ, Our water resources to safeguard ourselves from health hazards. underline the word health hazards. Why water and health hazards are closely connected? क्या ऐसा कुछ नहीं. Majority of the diseases, more than 60% diseases are waterborne. उधर लिखो, waterborne diseases ज़्यादा है. This is the word waterborne. 60% diseases spread from water. ये उसका वॉच है, क्यों उधर छोड़ के गए? चलो read. You do some physical workout in between. Chalo, read on. It's okay. This English I will never forget when I go to London. Degradation of the water. Underline one sentence, write in your notebook. Prevent degradation of water. You will shock my English mother also. She will die without a heart attack. My dear, लिखो. कौन है? सालों से. So you have an
You haven't met a teacher like me then, is it? अरे कौन है? So how will I come into your mind? Tell me. Again me, Are. To prevent degradation of water. Prevent. She read this word in a beautiful way. You missed it. Degradation of water. Everyone write in your notebook. Prevent degradation of water. Don't touch. Don't touch. You will have a sweet heart attack 2 more times. Degradation of water. Viraj Lika? How do you pronounce this word, Viraj? Degradation. Really? What is the meaning? It's okay. It's okay. I mistakenly बोला है. She's feeling so much shy. ए degradation का मतलब क्या है, विराज? Upgrade का उल्टा. I don't know. The quality of the water, है ना? चलो, go ahead. I'll put all the onus on this girl. She's reading beautifully. Carry on. Don't circle the pen. You write that word also. Over-exploitation. Right below. Over-exploitation and mismanagement of water. These are the causes. Why do we go for water conservation? Write down. Mismanagement and over-exploitation. If somebody asks you question, why water conservation? This is the meaning. Okay? Yes. Go ahead. Come again. What is that word? Wait. We'll get some new word. Impoverished. Correct? Eh? Okay. Hey, that's enough of reading. Everyone put the heading multi-purpose dams. I'm showing you the first, then I'll give you the meaning. Write down multi-purpose dams in your notebook. Everyone. You see how is the dam construction done? That's why I use the word yes. Multi-purpose dams. First you write meaning. How's my voice echoing? Refers to meaning. Refers to. No, yeah, construction. कल मालूम पड़ा बिल्डिंग के बाहर तूने डैम बांध दिया. What did I start with? Refers to bunding of a flowing river. Refers to bunding of a flowing river by constructing huge wall. By constructing huge wall storing water in the reservoir and storing water in the reservoir. Be careful with the spelling of the word reservoir. R-E-S-E-R-V-O-I-R. Storing the water in the reservoir. Okay, before I start explaining, please watch this video. I hope this is one of the biggest dam in the world. So who might have constructed this dam? Any idea? So मुझे भी मालूम. China. Listen to this. हाँ दूध की तरह ही रहता. Silent. What's it?
It flooded the total area of more than 156,000 acres of land with 46 billion tons of water. The sheer amount of water. How are dams built? Dams are usually built between a water source such as a river and a valley. The valley is later converted into a reservoir or an artificial lake using either water redirected from its natural source or elsewhere. Rivers are converted using tunnels along the side of the dam or its foundation. During the construction of these channels, soil is excavated and larger rocks are blasted on a slope to clear the path for water. For dams built across large flowing rivers, simply constructing channels to divert the water supply won't be enough. Instead, dams hoping to divert large rivers utilize strong construction pits built on both sides. If you look at this river, the natural flow path is this. Are you seeing? Now, purposely they are diverting this. Why? The dam site is here. Do you think it's so easy to divert the river? They either blast this site, you know what I mean by blasting it, so that the river gets diverted. Now they have the site. And construction is also not easy. Tons and tons of steel. And they have to go deep in, make the pillars. And even after constructing, Turant wo water ko divert nahi karte. They check the dam because once water starts, it's not easy to control the water, especially flowing water. Okay? Look at this. And the dam construction proceeds in stages, where water is allowed to pass through openings and completed portions of the dam. The reservoir can then be filled. Dams are either built on soil or rock foundations, depending on the type of dam and how much water is intended to support. The foundation must be rigid and strong enough to support both the weight of the dam itself and withstand the water pressure exerted on it. Since foundations are built below the ground, pockets of soft soil or rock are sometimes found during construction. They're replaced right away with stronger materials to ensure the dam's foundations are as sturdy as possible. Then any fissures or cracks are filled up right away with rock to prevent water from leaking out once the dam is complete. Going on to building the dam itself, you might be wondering where all the concrete comes from. For most dam construction projects, concrete batching plants are built on site. This gives workers access to large quantities of ready-to-use concrete, which is transported to the construction site using either a system of conveyor belts or via trucks and trains. Trucks is stored. Concrete is then poured into a mold in the required shape of the dam. The mold is built up in layers 3 to 6 feet high. After the dam is built, its reservoir can then be properly filled up. It can take several years for the process to happen either naturally or with the help of pumping units. At this point, the water level behind the dam must not be at operational levels. The dam has to be tested first. Once construction is complete, engineers use the first building as an opportunity to test the dam and see if it can hold. They closely monitor the building. Look for any deficiencies in the dam's design or construction and safely address them. Inspectors check for signs of leakage, cracking, or erosion. Repairs can be made to get the dam performing to its intended capacity. Dams are split into 2 categories. What's this? And heights. This refers to the amount of damage we inflict on its immediate surroundings if the dam fails. Dams also feature components specifically designed for safety, such as emergency spillway. During extreme events, including excessive rainfall or snowmelt, massive volumes of water spill through and are diverted downstream in controlled flow, ensuring the main dam structure does not need to withstand the additional water pressure. Dams need to stand the test of time, so they're never truly finished. Changing water levels around the world affect the operational conditions of these mega structures over time. Prolonged droughts can significantly reduce water levels in the reservoir behind the dam, affecting its ability to provide electricity. Whatever the case, dam operators and planners need to be ready to
Why I showed you this video, because dam construction itself is a big challenge, correct? And especially constructing such big dams, don't you think? And China is no short of any technology. Why? Why? Tell me. Yeah, कुछ डाला है कुछ? Do India possess dams? Have you heard about which dams very popular in Maharashtra? We have dams like Jaikwadi project. What is Jaikwadi? The water which comes down the dam, it is again pumped back to the reservoir. If I want to show it through the picture, a simple, not a picture, is it? A small diagram. Now look here. If I have a flowing river like this, correct? This is my embankment or the wall. And this part of the dam becomes what? Reservoir, where the water is stored. I mean, dam is sometimes become dangerous. Reservoir कभी-कभी पानी भर के डैम के ऊपर से भी पानी आता है, ओवर फ्लडिंग हो जाता है. But flooding को बचाने के लिए पानी बनाया है डैम. Okay, and these are which gates? Anybody? Which gates? Huh? These are called as floodgates. What floodgates? If you have gone to any dam sites, it is iron doors and is done mechanical or sometimes all automatic. And these doors are closed. So when the water is stored, so two things we say: to reduce the occurrence of drought and to prevent floods. ये दो main काम है उसका. फिर electricity है ना? Fishing है इधर. And channel water irrigation, etc., etc. So that's why one dam can serve more than which purpose? Many purpose. So they are called as which dams? Multi-purpose dams. Oh my God. I have gone to many dams, not for fishing, but for some multi-purpose dams. Okay, so put the heading. What did you write? Construction of a. Now only she is preparing for the next lecture. Oh, yeah. Reservoir. One more sentence. Major dams. Viraj, come back to the class. Major dams. Thank you. Major dams are also referred as multi-purpose dams. Major dams are also referred as multi-purpose dam because it serves. Oh, right now, what is it doing? पूरा watch का postmortem करके बैठा है. Because it serves more than one purpose. Because it serves more than not then, one purpose, like you write A, next line, A, next line. Avoiding floods, avoiding droughts and preventing floods. Avoiding droughts and preventing floods. Second point, hydroelectric generation. Hydroelectricity generation. Oh, बहुत अच्छा एक्टिंग है. क्यों? लिखना. क्यों? अच्छा कॉपी दो. Hydroelectricity generation or hydro. Yeah, 2-3 लाइन छोड़ दे. Why are you wasting the time? Next. Using reservoir water for fishing. इसका इतना भोला भाला चेहरा है ना. She is totally innocent what is happening inside the class. क्या बोल रहा था? सुना क्या? Using reservoir water for fishing. Recreational purposes. What is recreation? Every dam is a tourist center. Bada dams. Recreational purposes. So much of notes I'm writing on the board now. अच्छा है ना? Visual. नहीं समझ में आ रहा. क्यों? Recreational purposes. उधर लिख लो tourist attraction.
recreational purposes, tourist attraction. हाँ टूरिस्ट. आप लोग कोई डैम साइट्स अभी तक विजिट नहीं किया है? ये है कौन सा? अच्छा जो भी था. हनुमान जी का मंदिर है वो कहीं तो हम तो क्या हो गए के यार, तू ऐसे बोल जैसे मैं तेरा कार का डिक्की में बैठ के तेरे साथ. एटलीस्ट जगह नाम कुछ तो बोल. अरे वो हनुमान, हाँ उसके बाजू में सर. हाँ लेफ्ट में. हाँ सर. और हम दोनों साथ में कब गए थे? रिलैक्स रिलैक्स दिव्या, विल गो डीप डाउन इनटू द बेंचेस. और तुम्हारी दोस्त मेरे बकेट डाल के उठाना पड़ेगा, पानी के अंदर गई. अरे वेट वेट, लुक एट द वाइब्रेशन शी इज पुटिंग इनटू. Write the next point. Use of channel water for inland navigation. Whatever is the number. Use of inland navigation. Acha, use of channel water, sorry. For inland navigation. That's for today. Now you can start writing all the question answers which is complete, incomplete. Especially my two boys are sitting for inland navigation. Come on, fill up the question answers. You got any queries, please ask me. So we got valuable 5 minutes to go. I want everyone to fill up the question answers. Any question answers you are asking, I'm ready to give. Okay, Virat? Hey, your notebook is complete or incomplete? Tell me the truth. सर थोड़ा इनकम्प्लीट है. मतलब थोड़ा से complete किया है. नहीं मतलब थोड़ा सा बच. Yeah, bring it quickly. I told you 2 months before. 2 weeks before. 2 months he's opening his mouth. Come on, complete. Surface, above the surface, pond, lake. What? Keep it, na? Okay. And give it back to me after the class. Nahi, write it in the notebook. Hey, go down to the same chapter. Let me see how many questions you can write. Come to page number 60, not 60, 70, no, 67. 1, 2, 3. You can write. Write it in the notebook, those who do not have the textbook volume. 1, 2, 3. Start writing. Matlab question answers. I really love the language. Oh my dear girl, right. मेरे best friend था रजनीश शाही.
उसकी बॉलिंग भी मिला। हाँ सर वो बस और थोड़ा अजीब अजीब सा नहीं बट मेरे को देखकर थोड़ा मन मेरे को थोड़ा समझ में आता है उसको ध्यान नहीं रहता मैं जामनगर में पैदा हुआ उसके बाद सूरत में रहा ये सब मत करो भाई क्या क्या और खोल के बैठा है क्या पहले गांव में मैंने किसी एक लड़के ने आपको मेरा दोस्तों को नहीं कहना अरे मैं जा पढ़ाई कर और ये क्या वही कर सकते पर आप लोग अच्छा है ये सब दिया गया है उस 10 दिन में अच्छा ना सकते हैं बट इट्स राइट एम्ब्रेस दिस खाना पीना आते रहते हैं oh my friend was excellent आमरस एकला ढोकला and I like it but I don't like this biryani I was two maths teachers from who was from the Aryan एक तो मैंने वैसे Aryan भेज दिया यार बेचारा उसने ऐसे कर काम किए हैं उसकी वजह से मैं मेरा पैसा तो गया करने को पर उसका वजह से ना मेरा आप ये भाई hey guys anyone finished good the level jersey and running fencing which are idea थोड़ा very silent don't underestimate पर बोलने की शायद बोले you fight in your house you got to fight वो आपको मारता है कि आप उसे ऐसे अच्छा होता है वो एक काम करो इसको दे दो पैसे के लिए बड़ी मेहनत अरे वो नहीं होती पर बड़ा हो जाएगा मैंने 4 साल चला अभी लेकिन मतलब मम्मी हिंदू है मतलब पापा बहुत सर्टिफिकेट में रजिस्टर करते हैं पर पापा
if I say anything against Christianity, you can agree. नहीं, I don't see no. You don't need. नहीं, अरे बोला था कि अगर आपका opinion No, I never understood. When I been questions also now, sir, we are doing that part. Who push the negative messages when there is heavy snowfall, we have actually only apply किया जाता है जैसे लाइन से और कैसे होता है आवाज से लगा हुआ डार्क very interesting है I go to Mama Honey Church. But now many non-Christians will gather. Christians will bring it. So it was a nice experience. I learned Literacy and Christianity. Next time I learn something else. So thank you for all. Thank you for all my interest. Relax. ये बेटा तो बैठ के थोड़ी. ये कौन था? Viraj, don't run away. There is one more lecture.